Am I audible now? Okay. Good morning, everyone. Okay. Let us start. Let us start with some 12 sum देखो. Using truth tables, prove the following logical equivalences. The prove करना है कि the statements are equivalent. Okay. So first one is there are three variables p, q, and r. So p, q, r. Then we need p and q. Then left hand side. Left hand side is p and q implies r. For right hand side, first bracket is q implies r, and then the right hand side. P implies q implies r. So if there are three variables, there should be 8 rows. Okay. So 8 rows should be there. लोग भी start करो solve करना मेरे साथ. Okay. See, if there are 8 cases, you should write true 4 times. Okay, 4 times true, 4 times false in P column. In the column of P. Then Q alter 2 times true, 2 times false. Again 2 times true, 2 times false. Last variable is R, it should be alternate true false. Okay. Last column should be alternate true false. P and Q में क्या होता है? And में सिर्फ true होता है, right? So first one should be true. Second one should be true. Third is false. Fourth is false. Remaining all are false. Okay. P and Q. Ajinkya Gupta. Okay, I'm trying to speak louder. अभी तेरे फोन में या तेरे टैब में या तेरे लैपटॉप की आवाज कम रहेगी, then I can't help it. ठीक है? अजिंक्य गुप्ता, याद रखो. Then P and Q implies R. एप्लीकेशन में क्या होता है? True implies false, false होता है. ठीक है? तो ये ऑर्डर ये है इसमें. ठीक है? ऑर्डर इज लाइक दिस. P and Q implies R. तो एरो ऐसा है. Okay, so true implies true is true. True implies false is false. False implies true is true. So बाकी सब true रहेगा. Okay, rest all will be true.
Okay, then Q implies R. It should be true, false, true, true. This is again true, false, true, true. And finally, P implies Q implies R. So this column implies this column और arrow ऐसे इसी direction में है. Okay, so this is true. And this is false. This is true, 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 true. Rest all are true. Okay. Rest all are true. Okay, so देख सकते हो ट्रूथ टेबल से कि लेफ्ट हैंड साइड का ये जो कॉलम है और ये राइट हैंड साइड का कॉलम आर आइडेंटिकल. Okay. Since these two columns are identical, therefore you can say the given statements are equivalent. P and Q implies R is equivalent to P implies Q implies R. अभिज्ञा तांबे नंबर ऑफ रोज कैसे फाइंड करना मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में. नंबर ऑफ रोज मतलब नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल टू 2 रेज टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है, इसके लिए 8 केसेस हो गए. ओके. नेक्स्ट सम. ये अगर लिख के हो गया तो बोल दो, आई विल स्टार्ट नेक्स्ट वन. संचित तो लास्ट लेक्चर में एब्सेंट था क्या? पूछ रहा है कि विच चैप्टर. ओके. ये अगर हो गया तो बोल दो, आई विल स्टार्ट नेक्स्ट वन. ओके. नेक्स्ट सम करता हूँ. सेकेंड वाला ये इधर ही है, स्क्रीन पे ही है. Second one is there are 3 variables again, P, Q. I will write the question. P or Q and R is equivalent to P or Q and P or R. Okay. So 3 variables are there. Again, there will be 8 cases. LHS के लिए पहले bracket Q and R and then LHS. LHS is P or Q and R. For RHS, you need first bracket P or Q, then second bracket P or R, and then the right hand side. That is P or Q and P or R.
8 cases will be there. You can start solving this. Okay. So first column में 4 times true, 4 times false. Second में 2 times true, 2 times false. Again 2 times true, 2 times false. Last variable are alternate true false. Okay, करो try. संजीव होमवर्क प्रॉब्लम्स 1-3 डिस्कस करते हैं. रुक जा, पहले ये जो चल रहा है स्क्रीन पे है वो सॉल्व कर. नितेश जायसवाल लॉजिक का एक लेक्चर हुआ, ये दूसरा लेक्चर. शाबाश एबी. फर्स्ट क्यू एंड आर. एंड में क्या होता है, सिर्फ ट्रू 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 होता है. सो फर्स्ट वन विल बी ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू, अगेन रिमेनिंग 3 आर फॉल्स. देन P और Q और R मतलब ये दो कॉलम्स में और करना है. और में सिर्फ फॉल्स 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 होता है. ठीक है. फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड वन इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू, फोर्थ is true, fifth is true, 6, 7, 8 are false. Then P or Q. So it should be true, 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 true. Last two are false. And then P or R. It is true, 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 true. Then P or R. This is true, false, true, false. Then finally and लिखना है इन दोनों. Okay, so and में सिर्फ true 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 होता है. So first 5 will be true and last 3 are false. Okay, so using truth table you can see that LHS and RHS are same. Okay, so the given statements are identical. So finally you will write P or Q and R is equivalent to P or Q and P or R. अद्वैत वनडे. अद्वैत तेरा एक सम जो है ना साइन थीटा कॉस थीटा वाला वो सॉल्व करके भेजता हूँ मैं. ये तो लास्ट में इस लेक्चर के लास्ट 5 मिनट में डिस्कस करते हो. ठीक है. नहीं आर्यन, एंड इज नॉट वी, और इज वी, और इज वी. ओके, ये अगर लिख के हो गया तो बोल दो नेक्स्ट करता. ओके नेक्स्ट सम. ये कौन सा था, 12th था राइट.
12th. Thirteenth sum. Using truth tables, examine whether the following statement patterns are tautology, contradiction or contingency. Okay, तो ये भी पता है तुम लोग को, ऑल ट्रू मतलब टोटोलॉजी, इधर लिख रहा हूं मैं बाजू में। ऑल ट्रू का मतलब होता है टोटोलॉजी, ऑल फॉल्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन। एंड मिक्स्ड वैल्यूज रहेंगे देन कॉन्टिजेंसी। neither tautology neither tautology nor contradiction। का मतलब होता है कॉन्टिजेंसी। ठीक है। सो फर्स्ट के लिए टेबल प्रिपेयर करते हैं। देयर आर टू वेरिएबल्स p and q। okay, we need not q, so not q। okay, then we need p and not q। then next column should be p implies q। the last column is p and not q। by implies p implies q। okay, so there should be 4 rows। करो ट्राई। स्टडी बुक सम्स, स्टडी बुक के सम सही है। ठीक है, फर्स्ट हो गया तो सेकंड और थर्ड ट्राई करो तुम लोग। यस फरीद, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। होमवर्क सम्स मैंने भेज दिए थे, बहुत से लोगों को मिले भी थे। तो मैंने विद्यालंकार को भेज दिए थे, विद्यालंकार ने तुम लोग को सेंड किया होगा लिंक है तो सीधा पीडीएफ होमवर्क सम्स का। Okay, see, negation of q is opposite values of q, मतलब false, true, false, true। Then p and not q। okay, and में true 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 होता है सिर्फ, so false true, false false। okay, p implies q is true, false, true, true। by implication में क्या होता है, if you have same values of variables then the answer is true, so ये false आएगा, all false। okay, so you can say given statement is contradiction, given statement is contradiction। okay, सेकेंड वाला ट्राई करो। ठीक है, अदिति नहीं मिला तो आप, मैं उनको फिर से बोलूंगा कि आज सेंड करे। तो कौन सी बैच से है तू, विच ब्रांच? सेकेंड वाला सा, सेकेंड वन इज p and q और p and r। ठीक है, तीन वेरिएबल है इसमें, तो ट्राई करो। 8 cases should be there।
P, Q, R, then P and Q, then P and R, finally P and Q, or P and R. Okay, 8 cases. So 4 times true, 4 times false. Then 2 times true, 2 times false. Again 2 times true, 2 times false. Alternate true false in last column. Solve करो. ओके, कल्याण ब्रांच. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उनको कल्याण ब्रांच के स्टूडेंट्स को मतलब जो भी है पीडीएफ को भेज दे लास्ट लेक्चर का, और ये लेक्चर में जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो भी. ठीक है. P and Q is true, true, and remaining all are false. ठीक है. एंड में सिर्फ ट्रू 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 होता है. P and R में फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, रेस्ट ऑल आर फॉल्स. P and R में फर्स्ट ट्रू, थर्ड ट्रू, बाकी सब फॉल्स. एंड दिस और में ये ट्रू आएगा, ये ट्रू आएगा. This is true, remaining all are false. Okay, so mixed values are there, so the statement is contingency. Okay, so the given statement is contingency. Okay, third one, third sum. Okay, third देख लो. P और Q और R. Okay, यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए. By implies P और Q और R. तो ब्रैकेट लिखो उधर. P और Q और R by implies P और Q और R. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जिस ब्रांच को लास्ट लेक्चर का पीडीएफ नहीं भेजा है ना, उनको भेज देगा. ठीक है. ट्राई दिस सम. टोटोलॉजी आना चाहिए लास्ट में तुम लोग. जैसे एक दो लोगों ने बोला भी है. आर्यन ने बोला. ठीक है.
चलो इसको ट्राई। टोटोलॉजी मिलना चाहिए। 4 times true, 4 times false, then 2 times true, 2 times false, again 2 times true, 2 times false, alternate true false in column R. If P or Q, this should be true, 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 true. First 6 are true, last 2 are false. P और Q और R मतलब ये दो टेबल्स में और that is true, 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 true. Only last one is false. Q or R is true, 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 false, true, 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 false. The P or this first column or this column. इन दोनों में और करना should be true, 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 false. Last false is. और by implication में obviously if you have different inputs then false. So ये सब true आएगा इन दोनों देखो same values all true. Okay, so the given statement is tautology. हाँ दक्ष जैन यू कैन सॉल्व दैट लेकिन अगर उन्होंने बोला है ना सॉल्व बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल्स तो ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा अदरवाइज यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग लॉज ठीक है जो सेकेंड लास्ट टाइप है रूल्स या लॉज ठीक है उससे कर सकता है तो बट अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कि सॉल्व बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल देन यू विल हैव टू प्रिपेयर अ ट्रुथ टेबल ठीक है ये हो गया तो बोल दो नेक्स्ट करता हूँ नहीं ये और ये ठीक है लास्ट जो है वो ये दोनों टेबल्स में ये दोनों टेबल्स ये मैंने गलती से लिखा शायद ये दो टेबल में बाय इम्प्लीकेशन मतलब पी और क्यू और पी और क्यू और आर ये दो कॉलम नेक्स्ट 16th sum
Change लिखो. Change, change each of the following statements in the form of if then. If then form में लिखना है. If P then Q उस फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो you know this. If P then Q के का मतलब होता है P by implies Q. और उसको और भी अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हो, जो लास्ट लेक्चर में मैंने लिखवाया था तुम लोग को. P is sufficient for Q. सफिशिएंट कंडीशन बोल सकते हो. सेकंड इज Q is necessary condition for P. थर्ड लिख सकते हो Q follows from P. फोर्थ इज P only if Q. एंड फिफ्थ जो हमने पहले लिखा है P implies Q. ओके, ठीक है. तो फर्स्ट वाला जो रहेगा उसको इफ देन फॉर्म में लिखना है. ठीक है. व्हाट शुड बी आंसर ऑफ फर्स्ट वन? I shall come provided I finish my work. Obviously, if I finish my work, then I shall come. Second, rights follow from performing duties sincerely. Okay, क्या होगा इसका? अरे अर्जुन घोष प्रीफर वाइटिंग. जो मैं मतलब सॉल्यूशन है वो वाइट से लिख रहा हूँ मैं. जो भी पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, या तो इस सम के लिए जो नेसेसरी वो अलग अलग इंक से ही लिखना पड़ेगा मुझे. ठीक है. सेकेंड, राइट्स फॉलो फ्रॉम परफॉर्मिंग ड्यूटीज सिंसियरली. ठीक है, तो ये इस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में. ठीक है. विल से if the duties are performed sincerely, then rights follow. Third, third is in the form of fourth. ठीक है. थर्ड जो है वो फोर्थ फॉर्म में. If x is equal to 1, then x square is equal to x. फोर्थ सफिशिएंट मतलब फर्स्ट फॉर्म में. ठीक है. So if a person is rich, then he is rational.
Then fifth, getting bonus is necessary condition for me to purchase a car. Okay, necessary condition मतलब ये इस फॉर्म में है, सेकेंड वाले फॉर्म में. ठीक है, फिफ्थ वाला ये सेकेंड वाले फॉर्म. यू कैन से इफ आई परचेज अ कार, then I get bonus. Okay. तो ये जो 5 पॉइंट्स लिखे वो याद रखने हैं बस. ओके, ये हो गया तो बोल दे, मतलब लिख दो चैट में. नेक्स्ट करता हूँ. राहुल लास्ट उल्टा नहीं है रे, देखना. ओनली इफ में क्यों बाद में है. नेसेसरी कंडीशन फॉर पी. समझने जैसा कुछ है नहीं यार, ये फॉलो करना है. देखो, सी हियर, गेटिंग बोनस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर मी टू परचेज अ कार, ये सेकेंड फॉर्म में है. ठीक है, तो टू परचेज अ कार ये जो है दैट इज पी. ठीक है, एंड गेटिंग बोनस इज क्यू. ठीक है, दिस इज क्यू. तो इफ पी देन क्यू फॉर्म में अगर इसको लिखते हो तो क्या आएगा, इफ आई परचेज अ कार देन आई गेट अ बोनस. दिया है नो. एक्चुअली ये मतलब लॉजिक के खिलाफ है. मतलब तुम लोग सोचोगे यार कार मिलने पर थोड़ी ना बोनस, कार खरीदने पर थोड़ी बोनस मिलता है. पहले बोनस मिलना चाहिए, उसके बाद कार खरीद सकते हैं. आई नो दैट. ठीक है, ये फैक्ट है. लेकिन यहाँ पर ऐसा ही है, बिकॉज इट इज क्यू इज नेसेसरी कंडीशन फॉर पी अगर लिखा है ना, देन इट इज इफ पी देन क्यू. तो ये याद रखो. ठीक है, दिया पर दिया एक्चुअली इफ आई गेट बोनस देन आई विल परचेज अ कार नहीं होता. इफ आई गेट अ लोन देन आई विल परचेज अ कार. ठीक है. इलॉजिकल है ये तो. प्रिया देसाई क्या टाइप किया तूने यार. डोंट कंपेयर विद अदर्स. ठीक है, नहीं समझा तो बोल तू. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बोल, आई विल एक्सप्लेन. इंटरेस्ट मतलब क्या करना चाहिए. नेक्स्ट टाइम उसके मतलब ये जो पास्ट है उसके ऊपर मतलब डोंट थिंक ऑन इट. ठीक है, उसके ऊपर सोचो मत. जो फॉर्म लिखा गया है ना उसको फॉलो करो, दैट्स ऑल. नहीं नहीं, अभिज्ञा तंबे वैसा नहीं है. जो लिखा है ना उसको फॉलो करो प्लीज. डोंट ट्राई टू चेंज द फॉर्म, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स. ठीक है, ये मत सोचो कि ऐसे कैसे हो सकता है. अब अतुल सिंह, रीड मार्क्स. ठीक है, प्रिया देसाई अपनी कमेंट फिर से जरा टाइप कर दो. ओके, नेक्स्ट करता हूँ. 17th.
फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग केसेस. ठीक है, तो इसमें रिजल्ट दिया है बट वी नीड ट्रूथ वैल्यूज. Okay, next one. Find the truth values of P and Q in the following cases. It is given that P or Q is true and P and Q is also true. Then find the truth values of P and Q. ठीक है, ये सॉल्व करना है तुम लोग को. तो फर्स्ट देयर आर टू वेरिएबल्स P and Q. So P or Q and P and Q. ठीक है, so true, true. टेबल प्रिपेयर करना. एक्चुअली इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं बट यू हैव टू शो मेथड. ठीक है, अगर एमसीक्यूज में आता है तो ठीक है, मेथड बतानी पड़ेगी तुम लोग को. See, this is true, 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 false, false, true, false, false. P or Q is true, 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 and false. And P and Q, you know that it is true, false, false, false. ठीक है, अभी उन्होंने बोला है यहाँ पर कि P और Q is true. ठीक है, P और Q तीन केसेस में ट्रू है. ठीक है, एंड P एंड Q इज ऑल्सो ट्रू. तो P एंड Q सिर्फ एक केस में ट्रू है. ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन लोगे तुम लोग, मतलब ये दोनों देखो, ये दो सेटिस्फाई कर रहे. ठीक है, यू विल कंसिडर दिस, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आएगा ये. ठीक है, तो ये जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, सो यू कैन सी फॉर दिस द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर, पी की वैल्यू जो है दैट इज ट्रू एंड क्यू इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, इधर देख सकते हो पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू. ठीक है, सिमिलरली यू विल ट्राई सेकेंड एंड थर्ड. करो. सेकेंड वाला सॉल्व करो. इसका आंसर जरा इधर लिख रहा हूँ मैं, पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू. P is true and Q is also, ये आंसर है. ठीक है, सेकेंड सम. Second, it is given that P or Q is true and it is also given that P or Q implies Q is false. Okay, so same method use कर सकते हो. And get the answer. फाइनल आंसर ऐसे ही लिखने का जैसे मैंने लिखा है, टेबल के नीचे देखो, P is true, Q is true. Okay, इसमें देखो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स. P और Q is true, ट्रू, ट्रू फॉल्स होता है. ठीक है, P और Q implies Q का टेबल बनाओगे तो इट इज ट्रू, फॉल्स
ट्रू ट्रू। ठीक है, अभी जो उन्होंने बोला है उनको हाईलाइट करो। P और Q इज ट्रू, ये तीन केसेस में है। एंड P और Q इम्प्लाइज Q इज फॉल्स, ये एक केस में। तो इसका इंटरसेक्शन इज दिस केस। ठीक है, ये तुम लोग का ये जो गिवन केस है वो है। ठीक है, ये पूरा। ओके, फॉर दिस P is true and Q is false. So final answer is P is true and Q is false. ये फाइनल आंसर है, ऐसा हाईलाइट करना इसको। प्रीवियस सम का ये रहा। ठीक है, थर्ड में 3 आंसर्स है, राइट प्रथमेश? थर्ड में 3 आंसर्स है, बराबर। सानिया बोला मैंने फाइनल आंसर कैसे। वैष्णवी 2 सम्स हुए, देख थर्ड और एक बार बोलता हूँ, समझेगा? ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स किसने लिखा है? यस, करेक्ट है, करेक्ट है रिया। थर्ड कर रहा हूँ, देखो। थर्ड इज it is given that P and Q is false and P and Q implies Q. P and Q implies Q is true. Okay, so table. ठीक है, टेबल प्रिपेयर करो। P and Q में सिर्फ फर्स्ट वाला ट्रू होगा, बाकी तीन फॉल्स होंगे। And P implies Q implies Q. So this is true, true, true. P and Q implies true. So all true, right? ठीक है, सो इसमें देखो P and Q उन्होंने फॉल्स बोला है। P and Q फॉल्स मतलब ये तीन केसेस। P and Q implies Q मतलब ऑल फोर केसेस। तो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा ये तीनों कॉमन है। ठीक है, सो आंसर शुड बी ऑल दीज थ्री। ये तीनों आंसर्स होने चाहिए, मतलब ऐसे लिखोगे P, Q are either true or false true और false false। ठीक है, तीनों सही है। सो ये आंसर रहेगा इसका। लैग लैग। ओके, लैग लैग हो रहा है, ठीक है। लैग लैग टाइप मत करते रहो, नहीं तो और लैग होगा।
हुआ क्या स्टेबल? ठीक है, आई थिंक ओके है। ये समझा अभी? हेलो, इज इट ओके? अभी है स्क्रीन प्रॉपर? ओके, नेक्स्ट। ये लिख के हो गया तो नेक्स्ट करता हूं मैं। नेक्स्ट। भेलकर, साहिल भेलकर, स्ट्रीम खत्म नहीं हुआ अब तक। आंसर ऐसे क्यों लिखा है? तीन तीन केसेस है इसमें, इसके लिए आंसर वैसे लिखा है आदिति ने। ओके, ओके, नेक्स्ट सम। उससे पहले एक टाइप एक्सप्लेन करनी है मुझे। जो स्टार्ट में हमने टाइप्स लिखे ना, उसमें टाइप फाइव है, ठीक है? दिस इज टाइप फाइव। कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। अदिति, मैंने बोला व्हाई इज आंसर रिटन लाइक दिस, तीन तीन कॉम्बिनेशन है, इसके लिए वैसे लिखा है। Okay, now see this type, converse, inverse and contrapositive. If the कंडीशनल स्टेटमेंट अगर दिया है P implies Q, एक्चुअली वो होता है P implies Q, then its converse is Q implies P, then its inverse is negation of P implies negation of Q, and its contrapositive is
negation of Q implies negation of P. ठीक है, ये लिख के हो गया तो बोल देना, then I will explain the sum. लिख के हो गया तो बोल देना ये. ये ओके है क्या देखो. पहले सेकंड वाला देख लो, फर्स्ट वाला देख बाद में करते हैं. पहले सेकंड वाला करते हैं, देखो. If the function is differentiable, then it is continuous. This is conditional statement. If the function is differentiable, then it is continuous. Okay, तो पहले इसका converse. This part is P. Okay. Function is differentiable जो है, that is P. Okay, and it is continuous is Q. Okay, so first we'll write its converse. इसका converse होगा if the function is continuous. Converse में सिर्फ order change करनी है. If the function is continuous, then it is differentiable. ठीक है. Second one, inverse. इनवर्स में सिर्फ नॉट लिखना है स्टेटमेंट में. ठीक है, दोनों दोनों स्टेटमेंट्स में. सो इफ द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल,
then it is not continuous. Then it is not continuous. Okay. And third is contrapositive. Contrapositive में you have to change the order and write not. ठीक है. Order भी change होगा इसमें और not भी आएगा. Contrapositive, if the function is not continuous, then it is not differentiable. ये क्वेश्चन एटलीस्ट कंप्लीट करो. देखता हूँ मैं रिस्टार्ट करने की ट्राई करता हूँ. ये क्वेश्चन एटलीस्ट कंप्लीट करो.